हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, टेक महिंद्रा Q4 रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं टेक महिंद्रा Q4 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। सन ऑफ साइज, IT मेजर टेक महिंद्रा Q4 results reported a consolidated net profit of rupees 1118 crore for the fourth quarter ended March 2023, down 25.8% over a year ago. The profit stood at rupees 1506 crore in the same quarter last year. The net profit was lower than the ET Now poll estimates of rupees 1260 crore. Its revenue from operations during the reporting quarter rose 13.2% year on year to rupees 13,718 crore. Tech Mahindra current market price 1023.70 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1500। 1500 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 1023.70 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1500। रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बाय। Okay, the board has recommended a final dividend of rupees 32 per share, taking total dividend for final year 23 to rupees 50 per share. The company said in an exchange filing. So guys, 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी दे रही है। अगर आपके पास टेक महिंद्रा के शेयर्स है तो आप इसे होल्ड करके रखिए। ₹50 per share dividend. Earning before the interest, taxes, depreciations and amortizations, EBITDA declined 3.2% year on year to rupees 2021 crore. It was down 5.7% quarter on quarter. Earning per share EPS was at rupees 12.62 in Q4 final year 23. In final year 23, Tech Mahindra reported a profit after tax of rupees 4,832, down 13.2% year on year. Its revenue stood at rupees 53,290 crore in the financial year 2023. Meanwhile, EBITDA was at rupees 8,029 crore, up 0.1% year on year, and the margin at 15.1%, down 290 bps year on year. Okay, free cash flow of the financial year the 2023 stood at rupees 4,002 crore. As we step into final year 24, we see the increasing need for business to stay agile by the leveraging the next generation technologies. We are the strongly focused on helping our customers stay competitively dominant and relevant in the era of the fast evolving market conditions by helping them to adapt to learner and sustainable business models. GP Gurnani, CP Gurnani, MD and CEO of Tech Mahindra. CP Gurnani, CEO, Chief Executive Officer, and Rohit Anand, CFO, Chief Financial Officer of Tech Mahindra said, our strategy of prudence and operational excellence help us through the uncertainties. By final year 23, we continue to return cash to shareholders through consistent dividend policy.
Tech Mahindra and Microsoft join hands to bring network cloudifications as a service and A1 ops to telecom operators for their 5G core network. The 5G core network, the transformation will help telecom operators develop 5G core use cases and meet the customers growing the technological requirement such as the uh, augment reality AR, virtual reality VR, IoT, Internet of Things, and Edge computing, augmented augmented reality. Okay, it was selected a digital infrastructure partner by a large not-for-profit enterprises health system in America to provide the solutions designed to manage IT infrastructure, including critical areas such as server management, network services, and disaster recovery, among others. Okay, so guys, Tech Mahindra quarter 4 results profit falls 26% to rupees 1118 crore. डिविडेंड डिक्लेयर एट रुपीज़ 32 पर शेयर. 32 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है. अगर आपके पास इसके शेयर है तो आपको होल्ड करके रखना है. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.